आज इस वीडियो में हम AQAB क्लास 10th एग्जामिनेशन में 2015 का पेपर 1 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कौन सा क्वेश्चन मौजूद है। So this is our question number 1 in which we have to simplify this expression and let's solve this expression and इस एक्सप्रेशन को अगर हम गौर से देखें सो दिस एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1/a² - 2। सो a² + 1/a² - 2 is equals to a-1/a² सो अगर हम इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल आउट विद ईच अदर। सो remaining, the simplified form of this expression will become a-1/a. So the correct option for this question number 1 in this year is option B, that is a-1/a. Let's see question number 2 in which we have two expressions and we have to find the LCM of these two expressions. So let's make the factors of this x cube minus 1 or x cube minus 1 cube. So difference of cube का formula apply करेंगे. So we will get x minus 1 and x square plus x plus 1. So इन दो expressions में से हमें least common multiple find out करना है. So first expression is this and the second expression is this. So common factor is x minus x square plus x plus 1 is a common factor and the uncommon factor is x minus 1. So इन दोनों expressions का जो हमारे पास least common multiple है वो आएगा x minus 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमारे पास इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ये इक्वल हो जाएगा x³ - 1 और करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में मौजूद है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है इन तीन टर्म्स में से। सो 20x³ 5x² एंड 25x। सो इन तीनों में से HCF कैलकुलेट करना है हमें और HCF मीन्स वो टर्म्स जो कि इन तीनों में कॉमन आ रही है। सो इन तीनों के अंदर हमारे पास एक टर्म 5 है जो कि कॉमन है और x है जो कि कॉमन आ रहा है इन तीनों टर्म्स के अंदर। सो 5x इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज थ्री एक्सप्रेशंस। सो क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 5x। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 और इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना है इन दीज फोर ऑप्शंस। सो what is a proper rational expression? So rational expression means the expression in which variables is in denominator, and the proper expression means that the degree of numerator is less than the degree of denominator. So option A में हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, so this is improper fraction. सेकेंड ऑप्शन में देखें तो न्यूमरेटर का ऑर्डर 3 है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास ऑर्डर 3 आएगा। अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट में x ऑर्डर 2 में आएगा और साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम्स ऑर्डर 3। सिमिलरली ऑप्शन सी में भी हमारे पास न्यूमरेटर ऑर्डर 3 का है और डिनोमिनेटर में भी सिंप्लीफाई करने के बाद ऑर्डर 3 आएगा। सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इन विच न्यूमरेटर में अगर हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ऑर्डर 2 आएगा, डिनोमिनेटर इज ऑफ ऑर्डर 3। सो ओवरऑल this is the rational proper rational expression while these above three options were
improper rational expression. So correct option in question number 4 is option D. So let's see question number 5. So question number 5 में हमें कहा है कि P and Q both are less than 0. It's mean P is less than 0 and Q is also less than 0. So this mathematical statement means that P and Q both are negative numbers. And question में हमें बताना है कि which of the conditions are true. सो पी और क्यू अगर दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो अगर हम पी और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस ऑप्शन ए रिप्रेजेंट दैट आंसर इज लेस देन जीरो मींस आंसर विल बी नेगेटिव. सो दिस इज द इनकरेक्ट और द फॉल्स स्टेटमेंट. अगर हम एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं एक और नेगेटिव नंबर से तो हमारा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है ग्रेटर देन जीरो. So the correct option is option B, in which P and Q, product of P and Q, is greater than 0. Let's see question number 6. In this question, we have to represent this expression or this modulus in on number line. So modulus of x is less than or equal to 2. अगर हम इस मॉड्यूलस को एक्सपेंड करें तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी. x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2. सो हमने मॉड्यूलस को एक्सपेंड किया विद अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को एक्सपेंड करते हुए हमने जो इनइक्वालिटी की साइन थी उसको चेंज कर दिया. सो हमारा जो रिजल्ट है x जो है वो ग्रेटर है फ्रॉम -2 एंड x इज लेस देन और इक्वल्स टू +2. सो हमारा जो आंसर है वो -2 और +2 के बीच में लाई कर रहा है. सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज द ऑप्शन बी सी एंड डी जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इनफाइनाइट है, ऑप्शन सी में राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट है, जबकि ऑप्शन डी में राइट और लेफ्ट दोनों लिमिट्स इनफाइनाइट आ रही हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर जिसमें हमारा रिजल्ट या जो वैल्यूज ऑफ एक्स है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 एंड इट इज less than or equals to +2. So the correct option for question number 6 is option A. Let's come to question number 7. This is the simple linear expression जिसके हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो 5 minus 2x over 2 is equals to 0 with a square root on the left hand side. सो अगर हम स्क्वायर रूट को रिमूव करें तो लेट्स टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड. सो 5 minus 2x over 2 will be equal to 0. 5 minus 2x will be equals to 0 multiplied by 2 and 5 minus 2x will be equal to 0. 5 is equals to 2x. So finally x will be equals to 5 over 2. So correct option for this question is option B 5 over 2. Let's move to the next question, that is question number 8, and we have to find the solution set of this expression. Modulus of 2x minus 3 is equal to 1. सो इस मॉडुलस को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर के साथ एक्सपेंड कर देते हैं. सो 2x minus 3 is equals to plus 1 and 2x minus 3 is equal to minus 1. सो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें सो इट विल बी बिकम 1 plus 3 divided by 2. So x is equals to 4 over 2 and x is equals to 2. Similarly, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें सो इट विल बी -1 plus 3 divided by 2. So this is 2 over 2 and x will be equal to 1. So the solution set for this question is x is equals to 2 and x is equals to 1. So question number 8, we have a correct option in option C. Let's see question number 9.
इस क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर दो यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर के दरमियान एक ग्राफ दिया हुआ है बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। हमें क्वेश्चन डायग्राम इस ग्राफ के थ्रू बताना है कि 45 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री फ़ारेनहाइट। सो 45 अगर हम देखें डिग्री सेंटीग्रेड स्केल के ऊपर, तो सो दिस इज द 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे ग्राफ के ऊपर मीट कर रहा है इस पॉइंट पे। सो इस पॉइंट पे अगर हम अपने एक्स वाई एक्सिस की वैल्यू को चेक करें, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस लाइन। तो हमें यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू को रीड आउट करना है, इन विच वी हैव 1 2 3 4 एंड 5 डिविजन्स, और 5 डिविजन्स के दरमियान हमारे पास 50 यूनिट्स, इट्स मीन each division is equals to 10 units. So first line is 10, 110, this is 120, this is 130, 140 and 150. So इस लाइन की वैल्यू को अगर हम रीड करें, so this is 3 lines, so it will be equal to 130 degree Fahrenheit. So the correct option in question number 9 we have is option B, 130 degree Fahrenheit. Next, we have question number 10. And in this question, we have to identify the graph. And we have the graphical representation of this equation y is equals to x plus 1. And where x and y is the natural numbers and x is less than or equals to 3. So, हमें इस ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन बतानी है, and the equation we have is y is equals to x plus 1, और साथ साथ हमें condition given है that the values of x are less than or equals to 3. And one more thing is that x and y are the natural numbers. So natural numbers less than 3, where x will be equals to 3, x is equal to 2 and x is equals to 1. This means that हमारे पास इस इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ 3 सॉल्यूशन मौजूद होंगे। सो उसका मतलब ये हुआ कि दिस रिप्रेजेंटेशन एंड दिस ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेशन इज इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जब पॉइंट्स के दरमियान एक सॉलिड लाइन फॉर्म कर दी, तो दिस मीन्स दैट कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मौजूद हैं। इस ग्राफ के ऊपर हमारे पास 2 और 3 के बीच में भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर ओनली नेचुरल नंबर्स। सो अगर हम x की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 2। x की जगह अगर हम 2 पुट कर देते हैं तो y हमारे पास आ जाता है 3, x 3 पुट करते हैं तो y हमारे पास आ जाता है 4। सो इन तीन जो है वो वैल्यूज़ को, इन तीन ऑर्डर पेयर्स को चेक करेंगे। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, दैट इज ऑप्शन ए, इन विच x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास 1,2 ऑर्डर पेयर। सेकेंड इज x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3, 2,3 एंड 3,4। तो ये फर्स्ट ग्राफ है जो कि हमारे इन ऑर्डर पेयर्स को सेटिस्फाई कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज ऑप्शन ए। Next, we have question number 11 and 12. In question number 11, we have an equation x minus y is equals to 3. हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑर्डर पेयर है जो कि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ऑप्शन, x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू 2। In the second one, x is equals to -2 and y is equals to 1, and x is equals to -3 and y equals to 0. Then x is equals to 0 and y is equals to -3. सो वन बाय वन हम इन तमाम एक्स और वाई की वैल्यूज़ को वन बाय वन इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट्स चेक दिस ऑर्डर पेयर 0, -3, वेर एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई इज इक्वल्स टू 3। तो अगर हम इस इक्वेशन में एक्स की जगह 0 और वाई की जगह
-3 पुट कर देते हैं, सो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0 + 3 दैट इज इक्वल टू 3. इट्स मीन दिस order pair satisfy our equation. So the correct option for this question number 11 is option D. Next we have in question number 12 an quadratic equation जिसे हमें standard form के अंदर represent करना है. So 2x square minus 2x over 7 is equals to 3 over 7. So अगर हम यहाँ LCM ले लें left hand side पर, so we will get 14x square minus 2x is equal to 3 over 7. 7 and 7 cancel out हो जाएंगे, so हमारे पास remaining बचेगा 14x square minus 2x and ये 3 left hand side पे आकर minus हो जाएगा. So we have the standard form of this quadratic equation as 14x square minus 2x minus 3. So correct option is option C. So let's see the question number 13. और इस 13 क्वेश्चन में हमें कहा है कि वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 जिसमें हमारे पास कांस्टेंट 0 है. एक रूट हमारे पास इसका 0 है, दूसरा रूट हमें फाइंड आउट करना है. सो अगर हम इसकी फैक्टर्स फॉर्म कर लें, so we will get 2x minus 1 equals to 0. So one factor is equals to 0 and the other factor will can be obtained by this equation 2x minus 1 equals to 0. So in the second form factor we can get the root of this quadratic equation x is equals to 1 over 2. So correct option in question number 13 is option B, that is 1 over 2. एक और मेथड जिससे हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं वो ये कि अगर हम बारी बारी इन तमाम वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर पुट करें और चेक करें कि क्या हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही. जिस वैल्यू के ऊपर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, इट्स मीन दिस इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन. So let's see question number 14, and in this question we have to check whether what term should be added to make this a perfect square. So perfect square बनाने की कोशिश करते हैं इस टर्म को x square plus 5x. सो अगर हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो लेट्स सी हमें इसमें क्या चीज़ ऐड करनी पड़ेगी. सो फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर, then we have 2ab. For perfect square means a square plus 2ab plus b square. So this is equal to a plus b whole square or a minus b whole square. सो मिडिल टर्म फॉर्म करते हैं बाय मेकिंग 2ab, और यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर में कॉमन फैक्टर 2 नहीं है तो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं. सो दिस विल बिकम 2 इंटू 5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2. सो उसे एक्सप्रेशन को अगर हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बनाएं 2ab, सो दिस विल बिकम द 2 ऑफ द फॉर्मूला. ए की जगह हमारे पास एक्स आ जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट है इट विल बिकम बी. सो वैल्यू ऑफ बी इज 5 over 2. सो नेक्स्ट टर्म जो हमें यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी दैट इज द बी स्क्वायर. तो अगर हम यहाँ बी स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ बी विल बी 5 over 2 होल स्क्वायर. इट्स मीन कि अगर हम 25 over 4 5 over 2 का होल स्क्वायर इसे अगर हम ऐड कर देते हैं हम अपनी इक्वेशन के अंदर तो हमारा एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. सो ऑप्शन डी इन दिस क्वेश्चन नंबर 14 इज आवर करेक्ट आंसर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कोलिनियर पॉइंट आइडेंटिफाई करना है दैट 0 0 1 1 के बाद कोलिनियर पॉइंट्स कौन सा आएगा. एंड कोलिनियर पॉइंट का मतलब ऐसे पॉइंट जो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हों उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं. सो दिस इज ऑब्वियस कि 0 0 इज द ओरिजिन. 1 1 के बाद जो पॉइंट इन दोनों के साथ कोलिनियर आएगा इट विल बी 2 2. सो द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑप्शन ए.
Let's see the other question, that is question number 16. In the given figure, three collinear points are कोलिनियर पॉइंट्स विद क्यू. हमें आइडेंटिफाई करना है कि पॉइंट क्यू के साथ कौन से पॉइंट हैं जो कि कोलिनियर हैं. सो पॉइंट क्यू ये है हमारे पास. और अगर हम पी और आर को देखें तो पॉइंट पी और पॉइंट आर, ये दोनों पॉइंट्स क्यू के साथ एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें. इट्स मीन द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन विच पी, क्यू and R. These 3 points are collinear with point Q. So let's see question number 17 and 18. In question number 17, we have to identify that which of the following statements are true about the parallelogram. The first point states that point W, Y, and Z. This is point W, this is Y, and this is Z. Are collinear. Collinear means that points lie on a straight line. It means this is the incorrect. W, Y, or Z straight line में नहीं आ रहे. Point W, X, and Z may form a triangle W, X, and Z. So इन तीन पॉइंट से मिलके हम ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं, as we can see in the given diagram. One thing that is to be remembered is that any 3 points that are collinear will not form a triangle, and similarly vice versa. If 3 points are non-collinear, we can always make a triangle with these 3 points. So this option 2 is correct. And wx is equal to zy. Wx is equal to zy. सो सवाल में हमें कहा था कि ये फिगर हमारी एक पैरेललोग्राम है, और अकॉर्डिंग टू द थ्योरम्स ऑन द पैरेललोग्राम, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. सो दिस इज आल्सो ट्रू. सो द करेक्ट ऑप्शंस दैट आर 2 and 3 are correct. So the option D is the correct answer for this question. So let's see question number 18. And question number 18 states that the sine theta is less than 0 and cos theta is less than 0. This means that sine theta is negative and cos theta is also negative. So we have to identify that in which quadrant does our theta lie. सो चार क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है लास्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ एक्स की वैल्यूज़ और वाई की वैल्यूज़ दोनों प्लस में होती हैं. यहाँ एक्स हमारे पास नेगेटिव और वाई पॉजिटिव. यहाँ हमारे पास एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, और लास्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है. सो फॉर अ यूनिट सर्कल y इक्वल होता है हमारे पास साइन थीटा के, और इन द सेम केस यूनिट सर्कल के केस में x इक्वल होता है हमारे पास कॉस थीटा के. सवाल में कहा है हमें एक्स साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है. दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव. इसका मतलब है एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे, एंड द क्वाड्रेंट इन विच एक्स एंड वाई both are negative is the third quadrant. So our correct option for this question number 18 is option B, third quadrant, in which sine theta is negative and cos theta is also negative. Let's see question number 19 and 20. In question number 19, we have the DMS system in which 30 degrees and 30 minutes are given. इसे हमें डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है. सो 30 minute will be equals to 30 divided by 60 degrees, because 1 degree is equals to 60 minutes. इसे अगर हम डिवाइड करें तो 30 मिनट्स इक्वल हो जाएंगे हमारे पास 0.5 डिग्रीज के. सो दिस इज इक्वल टू 0.5 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री. So overall, by adding 30 degree into 0.5 degree, we will get 30.5 degrees. So correct option is option D. In the next question, that is question number 20, we have to find the length of the arc AB. So the formula for the arc length is L is equals to r theta.
where r is the radius, that is 3 centimeters, and the theta is the angle in radians, 2 pi divided by 3. So this is arc. This is the radius of the circle, and this is the theta in radians. So 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आर्क लेंथ इक्वल हो जाएगी 2 पाई के. So question number 20, correct option is option C, that is 2 pi. Let's come to the next question, question number 21. In question number 21, we have to find the value of tangent x. We know that tangent theta is equal to the perpendicular side divided by hypotenuse side. Sorry, perpendicular side divided by base. And one angle is 60 degrees, so this angle will be equals to 30 degrees. सो एक्स की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है. तो इन शॉर्ट सवाल में हमें कहा है टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने को. सो एज वी नो दैट टेंजेंट 30 इज इक्वल्स टू 1 ओवर रूट 3. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑप्शन डी. Let's come to question number 22. And in this question, we have two triangles. For the given triangle, which of the following equations is or are correct? So हमें आइडेंटिफाई करनी है कौन सी इक्वेशंस करेक्ट हैं. सो हमारे पास यहाँ दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. एक ट्राइंगल हमारे पास है बी, डी एंड सी, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है ए, बी एंड सी. दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, जिसमें हमारे पास एंगल सी पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है. सो अगर हम एंगल बी डी सी को देखें ट्राइंगल को, तो इसमें हमारे पास पाइथागोरस इक्वेशन फॉर्म होगी दैट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सिमिलरली ट्राइंगल ए बी सी में देखें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस साइड है जो कि सी के बराबर है, तो सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई. सो ये दो इक्वेशंस पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्म हो रही हैं इन दो ट्राइंगल्स में. सो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर and c square is equals to a square plus x plus y whole square. So these two statements are correct. So 1 and 3. Option C is the correct answer for this question number 22. Let's move to our next question, question number 23. In question number 23, which of the following are the possible values of the triangle? And this triangle is our right triangle, and right triangle means we can apply the Pythagoras theorem. So let's check this first option, uh, A4, B5, and C3. For this question, the longest side is the hypotenuse side. So hypotenuse is the side C, and side C in the option A is 3. So this is incorrect. Side C should be the greatest side. ऑप्शन बी में हमारे पास ए की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 4 है. इट्स मीन सी लॉन्गेस्ट साइड नहीं है. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन सी में हमारे पास 13 जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, तो और ऑप्शन डी के अंदर 13 लॉन्गेस्ट साइड है जो कि ऑप्शन ए में आ रही है, सी में नहीं आ रही. सो ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत है. सो दिस कुड बी आर राइट आंसर. सो इस ट्राइंगल के लिए हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो 13 स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, and 169, 13 square, 5 square is 25, and 144. So 169 equals to 169. So this option C, these values satisfy the Pythagoras theorem. So option C is the correct answer.
Let's come to our next question, that is question number 24 and 25. In a right angle triangle, the length of the shortest and the longest side are 6 and 10. हमारे पास shortest और longest sides given है, that is 6 and 10. We know that the longest side is the hypotenuse and the shortest side could be the perpendicular or base. So हमें third side find out करनी है. तो third side, let's say it is b square is equals to hypotenuse square minus perpendicular square. So 10 square minus 6 square will become 100 minus 36. 100 माइनस 36 विल इक्वल टू 64, और अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास थर्ड साइड आ जाएगी 8, दैट इज ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर. In question number 25, we have two circles that are touching internally. The radius circle of radius 1 centimeter touches the radius of 5 centimeter internally. दो हमारे पास रेडियस हैं, दैट इज 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, और दोनों सर्कल्स एक दूसरे को मीट कर रहे हैं. दे आर टचिंग इंटरनली. वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस between the centers of these circles. So we know that if the two circles touching internally, the distance between their centers is equal to difference of their radii. So 5 minus 1 will be equal to 4. So question number 25, the option A is the correct answer. Let's see question number 26. In question number 26, we have a circle with center O, and we have two different conditions that are true. OE is equal to OG. O से E तक डिस्टेंस और O से G तक डिस्टेंस ये दोनों बराबर हैं. OF and OH distance are equal. OF and OH ये दोनों डिस्टेंस भी आपस में बराबर हैं. Then which of the following conditions are false? हमें false condition को identify करना है. So four distances from the centers are equal. ये हमारे पास ओ ई डिस्टेंस और ओ जी डिस्टेंस आपस में बराबर हैं, and these two distance are from centers of the circle. It's mean that if OE and OG are equal, so the chord DC will be equal to the chord AB. ये दोनों chords आपस में बराबर होंगी. इसी तरह से अगर OF और OH, these two are the distances from the centers, so the chord AD will be equal to the chord BC. ये दोनों chords भी आपस में बराबर होंगी. So let's check these options. AB equal to DC, it's mean this is the correct. AB equal to AD, this is not correct. BC is equals to AD, BC and AD are equal, this is correct. And BC is congruent to AC. This is, let's check these two options. ए बी और ए डी, ए बी और ए डी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और बी डी कॉन्ग्रेंट टू ए सी, बी डी एंड ए सी. सो इफ वी सी दैट दिस इज द ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, और ए सी और बी डी ये दोनों जो है वो ए सी और बी डी दोनों डायगनल्स हैं, and diagonals of our quadrilateral of our rectangle are equal. So question number 26, the so in a way this statement is also correct. So the false statement in this question is option B, that is the wrong statement about this given figure. So question option B is the correct answer for question 26. Let's come to the question number 27. This is a simple question in which how many circles can pass through three non-collinear points. So as we have studied in a theorem that there is only one and only one circle that can pass through three non-collinear points.
In question number 28, we have a circle with the center O. The arc length AB and arc length CD are equal. AB और CD जो arc length हैं ये दोनों बराबर हैं. So let's make a line to make this arc length. So we have studied in the theorem that if the arc length are equal, so this means that the central angle will also be equal, and the chords formed between these 2 point AB and CD ये दोनों chords भी आपस में बराबर होंगी. So arc BC is equal to CD. Arc BC और CD बराबर नहीं है, as we can see in the diagram. So these are not equal. Arc AD is equals to BC. AD और BC ये जो दो आर्क्स हैं, BC arc और AD arc ये दोनों बराबर होंगी. This is correct. BOC is equals to AOD. BOC is this angle and AOD is this angle. ये दोनों angles आपस में बराबर होंगे. Correct option है BOA and COD. BOA is this angle and COD is this angle. ये दोनों angles भी आपस में बराबर होंगे. So the false statement is our option D. Let's see question number 29. And in this question, we have a circle with center O, and we have to find the value of x. So in from this given diagram, we can see that this x and this angle 50-degree are the angles of a same segment. And according to the theorem, the angles formed in the same segment of a same circle are always equal. So the value of x would be equal to 50-degree. So the correct option is option C, 50-degree. Let's see the last question of this year, question number 30. In question number 30, we have three circles and a polygon, inscribed polygons are formed in these three circles. We have a rectangle, we have a quadrilateral, and we have a triangle. In these circles, we have to identify in which circles the A plus B is equal to 180-degree. So we have studied that inscribed quadrilateral. So inscribed quadrilateral is the one in whose four vertices lie on the circles. चारों vertices circle के ऊपर lie करें. So this is known as inscribed quadrilateral. और ऑप्शन 1 और 2 में हमारे पास इंस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है सर्कल का, जिसमें ए और बी ऑपोजिट एंगल्स हैं. सो इन इंस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ऑपोजिट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं. सो ए और बी दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का जो सम है वो इक्वल होगा 180-डिग्री. सिमिलरली यहाँ पर भी ए प्लस बी का जो सम है वो इक्वल होगा 180-डिग्री के. सो 1 and 2 is the correct option in this question. So question number 30, option C is the correct answer.